Hello, children. Here I am back with another English reader lesson, lesson number 3, collecting seashells. But before starting up with the lesson, I want to ask everyone that do you have a hobby of yourself? क्या आपकी खुद की कोई हॉबी है जिसको आप पूरा भी करते हैं? You fulfill that hobby, you work upon that hobby. क्या आप उस पर वर्क करते हैं? Yes, it's very good hearing this. सब लोगों की कोई ना कोई हॉबी होती है. Everyone have a hobby of them and they work upon that hobby, fulfill that hobby, and like when they work over that, it takes a pleasure after fulfilling it. Yes, बहुत अच्छा लगता है उसको पूरा करने के बाद. And to know more about it, अपनी हॉबी के बारे में जानना, उसको पूरा करना बहुत अच्छा लगता है. Same is given in this story as well. Let's continue with the story now. One of the pleasures of going to the seaside is collecting shells from the beach. Rajat and Rima learnt what shells really are when they visited a beach in Goa. सबसे ज़्यादा मज़ा तो तब आता है जब हम शेल्स कलेक्ट करते हैं एक बीच पे जाके. जब हम बीच पे जाते हैं और शेल्स को कलेक्ट करते हैं तो कितना मज़ा आता है. बहुत सारे आपने देखा होगा दैट मोस्ट ऑफ द पीपल either old or young or teenager, whoever is there, when they go to a beach, when they visit a beach, they totally 100% I'm correct that they definitely they collect the shells from there, whatever kind of shells they get, they collect it and they came back home. Yes, collect करके ज़रूर घर पे आते हैं. Same here, Rajat and Rima did the same thing when they visited the beach. जब वो बीच पे गए, गोवा के बीच पे, तो उन्होंने भी यही किया. उन्होंने भी शेल्स कलेक्ट करे और लेकर आए. एंड इवन दे लर्न सो मैनी थिंग्स अबाउट द शेल्स. उन्होंने वहाँ पे उन शेल्स के बारे में सिर्फ कलेक्ट ही नहीं करे, उन्हें उनके बारे में जाना भी कि शेल्स किसके होते हैं, क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, एवरीथिंग. नाउ लेट्स सी कि उन्होंने उनके बारे में क्या जाना, कौन से शेल्स उन्होंने कलेक्ट करे और उन शेल्स का उन्होंने क्या किया. सो लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरी. Wow, look at those waves, Rajat said, pointing at the frothy white waves in the ocean. 7-year-old Rajat was visiting Goa for the first time. He was thrilled to see the golden beach close to the hotel where his family was staying. As Rajat walked along the beach with his sister Rima and mother, he was excited to see different shells lying on the sand. Whom do these shells belong to, Ma? Rajat asked his mother curiously. They belong to little sea animals. The shell is made by the sea animal and becomes its home and protects it. The waves bring these shells to the seashore. Rima picked up a large pinkish shell and peered into it. There is no animal in this shell, she said. It is empty. The animal that made the shell must have left the shell behind, Mother explained. Now, what is given in this story is that Rajat, a 7-year-old boy, he visited Goa with his sister Rima and mother. They stayed in a hotel there, and on the next day they visited the beach which was very close to the hotel. When they visited the beach, they saw so many shells. They saw the waves and shells lying down there. They all were very excited, especially Rajat. Rajat was so excited, he was so thrilled to see those frothy white waves. Frothy white waves means the waves having bubbles. वो waves जिसमें bubbles आती हैं in the ocean. So he was so excited, he was so thrilled to see those waves that he went there and he was started running over there. वो तो भागने लग गया, इधर से उधर देखने लग गया. And he was, when he looked down, so many shells were lying down there. And he asked his mother that whom do these shells belong to? कि ये shells किसके हैं? The mother explained. Mother ने उसको फिर explain करा.
that these shells actually belong to the little one sea creatures. वो जो छोटे छोटे सी एनिमल्स होते हैं, सी क्रिएचर्स होते हैं, उनके ये शेल्स होते हैं. They made this shell so that these shells protect them. They make these shells their home. मदर ने एक्सप्लेन करा कि वो जो एनिमल्स होते हैं, जो सी एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, वही इन एनिमल्स ने इनको शेल्स को बनाया है. और ये इसलिए बनाया ताकि वो इनको प्रोटेक्ट कर सके, वो इसमें रह सके और ये उनको दूसरे एनिमी से प्रोटेक्ट करेगा. तो ये एक तरह से इनका होम हो गया, घर हो गया. एंड द वेव्स ब्रिंग दी शेल्स टू द सी शोर. और ये वेव्स इन सी शेल्स को यहाँ पर सी शोर तक, कॉर्नर तक लेकर आ गई है. After hearing what mother said, रीमा picked up a large pinkish shell. एक लार्ज पिंक कलर का रीमा ने एक शेल उठाया और उसमें पीप करने लगी. उसमें ये चेक करने लगी कि क्या उसमें सी एनिमल है, क्योंकि वो उसके घर है तो वो उसमें ज़रूर होगा. But after peeping it, after peering into it, she said that Mama, there is no sea animal. It is empty. It is blank. ये तो खाली है, इसमें तो कुछ नहीं है, कोई भी sea animal नहीं है. So mother explained again. इस बार मदर ने रीमा को एक्सप्लेन करा कि जो एनिमल है who made the shell must have left the shell behind. शायद उसने शेल को पीछे छोड़ दिया होगा और वो इस शेल से बाहर निकल के ओशन में चला गया होगा. और ये जो शेल, जो खाली शेल है, वो वेव्स इसको यहाँ पर सी शोर पे, कॉर्नर पे लेके आ गए, इसलिए ये खाली है. Can I take this shell then, Ma? Reema asked eagerly. It is so pretty. Yes, you can take the shell. We will try to find out more about it when we get home, her mother said. As Rajat and Reema ran along the beach, they found shells in many different shapes and colors. There were some shaped like fans, some were spiral shaped, and others looked like little cones. They also found shiny spotted shells and striped shells. When they were back at their hotel, Rajat and Reema washed and dried the shells that they had collected. Let us gather some more shells from the beach tomorrow, said Rajat. We had so much fun today. Perhaps we can find some that we do not already have. Collecting seashells is so exciting. Now, what happened when रीमा looked into the shell and it was empty? जब रीमा ने शेल में देखा और वो खाली था, ब्लैंक था, और मदर ने कहा कि शायद जो भी एनिमल होगा वो ओशन में रह गया होगा और ये जो शेल है, ये वेव्स इनको यहाँ पर सी शोर तक लेकर आ गई होंगी. After hearing what the mother said, so रीमा asked eagerly. रीमा ने मदर से बहुत ईगरली, बहुत कीनली उससे पूछा कि ममा, क्या मैं ये शेल अपने पास रख सकती हूँ? कैन आई टेक दिस शेल? बिकॉज इट्स लुकिंग सो प्रिटी, बहुत प्रिटी लग रहा है, एंड सी एनिमल इज ऑल्सो नॉट देयर, सो कैन आई टेक दिस शेल? सो मदर सेड कि येस, यू कैन टेक दिस शेल. सी एनिमल इज नॉट देयर एंड इफ यू फील दैट इट इज प्रिटी, यू कैन टेक इट. और जब हम घर जाएंगे तब हम इसके बारे में और सर्च करेंगे और ढूंढेंगे, जानेंगे कि शेल्स कौन बनाता है, कैसे बनाता है, बहुत कुछ अच्छा अच्छा हम जानेंगे, नॉलेज गेन करेंगे. आफ्टर दैट रजत एंड रीमा पूरे बीच पे रैन करने लगे, भागने लगे इधर से उधर, और जहाँ जहाँ भी उनको शेल्स दिखे उन्होंने वो शेल्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया. उनको बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के शेप्स दिखे, जैसे कि फ़ैन के शेप का था, एक कोई उनको स्पायरल शेप्ड उनको मिला, अदर्स लुक्ड लाइक लिटिल कोन्स की तरह उनको शेप दिखे. बहुत सारे उनको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के उन्होंने ये सारे शेल्स को कलेक्ट कर लिया. और जब वो अपने होटल वापस आए तो रजत एंड रीमा वॉश्ड एंड ड्राइड द शेल्स दैट दे हैड कलेक्टेड. जो भी शेल्स उन्होंने कलेक्ट करे उनको पहले वॉश करा एंड देन दे ड्राइड दोज शेल्स whatever they had collected. And while they were doing all this, they were discussing among themselves that when they will visit the beach next day, जब वो next day visit जाएंगे, beach पे जाएंगे, तो वहाँ पे से और सारे खूब सारे shells को collect करके लेके आएंगे. But this time they will not collect those shells which were already being collected. जो पहले से ही वो collect कर चुके हैं
वो वाले शेल्स वो नहीं लेकर आएंगे, जबकि दूसरे शेल्स लेकर आएंगे ताकि हमारे पास और भी बहुत सारे शेल्स हो जाएं। तो इस चीज़ को उन्होंने अपनी हॉबी बना लिया और इसके बारे में उन्होंने और इन्फॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज दे फाउंड इट सो एक्साइटिंग. The collecting seashells, they found it so exciting that they made it their hobby. Collecting something, they made it hobby. Like so many people are there in the world who collect something or the other. Some had a hobby of collecting the old coins, and some had a habit of collecting the toffee wrappers. Some another. हर किसी की कोई ना कोई हैबिट होती है कुछ ना कुछ कलेक्ट करने की. Like when I was young, I had a hobby of collecting the stickers of the famous show Pokemon. मैं Pokemon के जो stickers थे वो कलेक्ट करती थी. I had a huge collection of it. अब सबकी कोई ना कोई हॉबी होती है. So same here as Rajat and Reema had a hobby when they were young. ऐसे ही आप भी अपने एक हॉबी ढूंढिए, कुछ भी कलेक्ट करिए और उस पर वर्क करिए, उसके बारे में और अच्छे से जानिए, कुछ वर्क करिए. Till the time, thank you. Bye bye.